हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी परीक्षा चैनल। सो आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। सो दिस इज़ ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, राइट। सो ज्योग्राफी से रिलेवेंट कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि मोस्टली हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स क्वेश्चंस देखेंगे और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो ऐसी बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कीजिए, राइट। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इजी परीक्षा को। और इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इजी परीक्षा को ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ कैसा है? सो अर्थ का शेप कैसा है? सो सर्कल है, स्पीयर है, जियोइड है और नोटेबल स्पीयर है। सो एक नोटेबल स्पीयर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज सेड टू बी। सो जब अर्थ सन से एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है, दूरी पे रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? सो इसको एपिलियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि जब अर्थ सन के बहुत पास रहता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द डे एंड नाइट। सो प्राइमरी कॉज ऑफ द डे एंड नाइट, सो रात और दिन का होने का एक प्राइमरी कॉज क्या है? सो इसका अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस। सो जब अर्थ रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस, ये एक प्राइमरी कॉज है फॉर डे एंड नाइट, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो व्हाट विल हैपन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी व्हाट कॉजेज द चेंजेस ऑफ सीजन। सो अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लेशन ऑफ इट्स एक्सिस। अर्थ का रिवॉल्व होना और इंक्लाइन होना ऑफ इट्स एक्सिस पे ये सीजन्स के चेंज होने का रीज़न है, राइट। सो द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोन इज़ नॉट इनफ। सो एक ये इनफ नहीं है कि वो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करना अर्थ का इनफ नहीं है फॉर चेंज ऑफ द सीजन, ठीक। हैड द एक्सिस ऑफ द अर्थ बीन वर्टिकल द सन वुड हैव बीन वर्टिकल एट द सेम लैटिट्यूड थ्रूआउट द ईयर, राइट। So therefore the revolution of the earth and its inclination both are necessary for the change of season. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच प्लैनेट वुड वन विटनेस सनराइज इन दी वेस्ट। सो किस प्लैनेट पे सनराइज जो होगा, सूर्य का उदय होगा वेस्ट पे? सो इट इज़ वीनस। सो वीनस पे सन का सनराइज होता है फ्रॉम वेस्ट, राइट। So direction of sunrise depends upon the direction of rotation of the earth on its axis, right? Any planet rotates on its axis from west to east will experience sunrise in the east and vice versa. Venus rotates on its axis from east to west and thus experience sunrise in the west, right? चलिए next question देखते हैं. The latitude is the angular distance of a point on the earth's surface with respect to, so इसका आंसर है equator, right? So latitude is distance north or south of the equator. It may also be defined as an angle which ranges from 0 degree at the equator and to 90 degree at the poles. चलिए next question देखते हैं. The longitude of a place is its, so it is an angular distance east or west of the prime meridian का होना ही longitude कहलाता है, ठीक है. So longitude is measured in a degrees east or west of the prime meridian. Next question देखते हैं. On which डेट इज द अर्थ इन पैरेलियन। सो ये डेट है 3rd जनवरी। सो अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन एट द पैरेलियन January 3 व्हेन इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ इज इन एपिलियन ऑन, सो अर्थ जब सन के से दूर रहता है सो इट इज डेट ऑन July 4th, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सन इज वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन, सो इट इज़ ऑन June 21। सो इसको कहते हैं समर सोलिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स। सो विद इन दीज सर्कल ओनली कैन द डेज एंड नाइट बी लॉन्गर देन 24 hours, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट इक्विनॉक्स। सो इक्विनॉक्स के बारे में क्या सही है? सो इट इज़ वर्टिकल सन ओवर द इक्वेटर इज नोन एज इक्विनॉक्स। यस, जब वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली सन रहता है ना, सो इट इज़ नोन एज इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आप ये याद रखिएगा कि इक्वेटर के ऊपर अगर सन वर्टिकली है तो इसको इक्विनॉक्स कहते हैं, राइट। हाउ मच इज द मास ऑफ द मून व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अर्थ। सो मास कितना है मून का? सो इट इज़ 1/81 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मून इज नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ। सो
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मून इज नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज 41%. हमको मून नहीं दिखाई देता फ्रॉम द अर्थ से, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, सो इट इज 3,84,000 किलोमीटर. एक एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द मून एंड द अर्थ, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज, सो सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ग्रीन विच मीन टाइम इज डैश IST, सो इट इज 5.5 आवर बिहाइंड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेलेशियस बॉडीज. सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेलेशियस, सो सेलेशियस बॉडी के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ईयर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑन द सर्फेस ऑफ द मून द मास इज सेम बट द वेट इज लेसर. सो मास मून के सरफेस में मास जो है वो सेम रहेगा पर वेट कम हो जाएगा, सो बिकॉज ऑफ लेस ऑफ ग्रेविटी पुल के कारण, राइट. ग्रेविटी कम होती है वहाँ पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू प्लेसेस इज अलॉन्ग दी, so it is along the shortest route between the two places along the longitude. So shortest between the two places on the earth's surface is along the grid circle. The property of a grid circle is that a plane passed along it passes through the center of the earth and divided it into two equal part or hemisphere. Among the latitude only the equator is a grid circle, while among longitude all of them are grid circle, right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे. सो एस्टेरॉइड्स आर द रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज इन ऑर्बिटिंग द सन. नेक्स्ट है. मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज लार्ज एज 1,000 किलोमीटर. नेक्स्ट है. द ऑर्बिट ऑफ द एस्टेरॉइड लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड द सैटर्न. सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. सो इसमें से स्टेटमेंट 1 and 2 सही है क्योंकि मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, right. So asteroids are rocky debris of varying size orbiting the sun. They are generally small and but some of them have diameter up to 1,000 kilometer. Asteroids are minor planets which orbit lie between the Jupiter and Mars. बोला था ना Jupiter और Mars के बीच में asteroid belts होता है. These are said to be the fragments of a larger planet disrupted a long ago. Their number is estimated to be 30,000 pieces of rock debris, out of which more than half are known. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अवर सोलर सिस्टम. सो द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.5 ग्रेविटी पर सेंटीमीटर क्यूब, G per centimeter cube, right. This is an average of all the material on the planet. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डायमंड रिंग इज अ फिनोमेना ऑब्जर्व्ड. सो डायमंड रिंग कहाँ पे देखने को मिलता है. सो हमको ये देखने को मिलता है ओनली अराउंड द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटली ट्रेल. सो डायमंड रिंग इज अ फिनोमेना विच ऑकर अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल, राइट. एज द लास्ट बिट ऑफ द सनलाइट passes through the valley on the moon limbs and the faint corona around the sun is just becoming visible, it looks like a ring with glittering diamonds on it. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टेल ऑफ अ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज द टेल ऑफ अ कॉमेट इज अ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज द कॉमेट रोटेट अराउंड द सन. कॉमेट सन के अराउंड घूमता है एंड द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोन. सो जो लाइटर मास है कॉमेट का इज पुश्ड अवे ड्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ठीक है. The tail of the comet is always away from the sun because the comet rotates around the sun. The lighter mass of the comet is pushed away due to the centrifugal force alone. The tail of a comet is made up of gas and tiny particles that are carried away from the sun by the solar winds. Comets are formed mostly from the ice and dust, and their trails only form when they are closer enough to be melted by heat from sun. As the nucleus of a comet begins to melt and it forms a cloud of gases and small particles known as coma. When comets travel close enough into a center of our solar system, pressure from sunlight causes the coma to form a tail that stretches away from the sun. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज एसोसिएशन एंड अदर इज रीजन. सो हमको एसोसिएशन की बेसिस पे रीजन देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि दोनों गलत है. चलिए बताना है. द सेम फेज ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ. Reason है, the moon rotates about its own axis in days, which is about the same time that it takes to orbit the earth. So इसका आंसर है both A and R true and R is correct explanation of A. So both statements सही है, ठीक है. The same side of the moon is always face the earth because the moon spin once
on its own axis in exactly the same amount of time that the moon revolves around the earth. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. सो assertion reasoning वाला ये भी. Existence of a human life on Venus is highly improbable. Venus has extremely high level of carbon dioxide in its atmosphere. So both A and R are true. Assertion भी सही है, reason भी सही है, and R is correct explanation of A. So existence of human life on Venus is highly improbable because Venus has extremely high level of carbon dioxide in its atmosphere, right? Next question देखते हैं. The term Zinzi is referred to when. So the moon, sun and earth lie along a straight line. जब तीनों एक लाइन में होते हैं सब the term Zinzi is referred. ठीक है. As seen from the earth, a solar eclipse is a type of eclipse that occurs when the moon passes between the sun and earth. Sun and the earth, and the moon fully or partially block the sun. This can happen only at new moon, when the sun and the moon are in conjunction as seen from the earth in an alignment referred to as in a total eclipse. The disk of the sun is fully obscured by the moon. In partial and annular eclipse, only part of the sun is obscured. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी assertion reasoning वाला है. So to orbit around the sun, the planet must take lesser time that time taken by the earth. So मार्स को कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अर्थ टू रिवॉल्व टू ऑर्बिट अराउंड द सन. ठीक है. द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ. सो डायमीटर, सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ट्विंकलिंग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू. सो तारक जो चमकता है वो क्यों होता है, ट्विंकल क्यों करता है. So it is due to the atmospheric refraction of straight starlight. Twinkling of star is due to the atmospheric refraction of stars. The star twinkles because of turbulence in the atmosphere of the earth. As the atmosphere churns, the light from the star is refracted in different directions. This causes the star image to change slightly in brightness and position and hence twinkle. This is one of the reasons the Hubble. So this causes a star image. This is one of the reason the Hubble telescope is so successful in space. There is no atmosphere to make the star twinkle, allowing a much better image to be obtained. Next question देखते हैं. Which of the following phenomena is the effect of rotation of the earth? So apparent movement of the sun, the moon and the star, a flatness of the poles and the bulge at the equator, occurrence of sunrise, noon and sunset, magnetic field of the earth. So इसका आंसर है all the above, 1, 2, 3 and 4. Given phenomena are the effect of rotation of the earth. The earth rotates from the west towards the east as viewed from the north star or polar star Polaris. The earth turns counterclockwise. Next question देखते हैं. What is meant by the eclipse of moon? So eclipse of moon से आप क्या समझते हैं? So it occurs when the earth comes between the sun and the moon. सब जब earth, sun and moon के बीच में आ जाता है, तो and the center of all the three are on the straight line. So इसको हम eclipse of moon कहते हैं, right? Next question देखते हैं. Consider the following statement. The albedo of an object determines its visual brightness when viewed with reflected light. The albedo of the Mercury is much greater than the albedo of Earth. So इसका आंसर है 1 only. So the albedo of an object determines its visual brightness when viewed from the reflected light. Albedo is a fraction of solar energy reflected from the Earth back into the space. It is measured of reflectivity of the Earth's surface. Right. Next question देखते हैं. The inexhaustible source of energy of the star is due to conversion of hydrogen into helium. Right. So inexhaustible source of energy of the star is due to the conversion of hydrogen to helium. ये sun में भी होता है. Sun is also a star, right? In the exterior of the star, the particle moves rapidly in every direction because of high temperature. High temperature होने के कारण particles हर direction में move करते हैं. So often a proton moves close enough to a nucleus to be captured and a nuclear reaction take place. Only proton of extremely high energy are capable of producing nuclear event of this kind. ठीक है, जिस प्रोटॉन में सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होती है इस काइंड की इवेंट को होने देते हैं. ठीक है. अब मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन इज रफली 10 मिलियन केल्विन.
So since the energy of the protons are proportional to the temperature, the rate of energy production rises steeply as temperature increases. Next question देखते हैं. Consider the following statement. The Earth receives the sun energy at the infrared end of the spectrum. The Earth re-radiates the sun heat as ultraviolet energy. Which of the following statement is given are correct? So neither one nor two. The sun radiates vast quantity of energy into space across a wide spectrum of wavelength. Most of the radiant energy from the sun is concentrated in the visible and near visible parts of the spectrum. The narrow band of the visible light between 400 to 700 nanometer represent 43% of the total radiant energy emitted. Wavelength shorter than the visible account for 7 to 8% of the total, but are extremely important because of their high energy per photon. The shorter the wavelength of light, the more energy it contains, right? So next question we will see. Consider the following statement regarding the asteroids and the comet. The asteroids are small rocky planetoids, while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material. Asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. Comet shows a perceptible glowing tail, while asteroids do not. Which of the statement is given are correct? So the correct option is C, 1 and 3 only. So asteroids are small rocky planet, while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material. Comets show a perceptible glowing tail, while asteroids do not show. Right. So asteroids are small rocky planets. They are small airless rocky worlds revolving around the sun that are too small to be called planets. They are also called as planetoids or minor planets. In total, the mass of all the asteroids is less than the Earth's moon. Okay. Comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material. Comets show a perceptible glowing tail, while asteroids do not. Right. Next question देखते हैं. The blue moon phenomena occurs when the two full moon occur in the same month. जब दो full moon होते हैं same month में, so blue moon phenomena होता है. ठीक है. A blue moon is called the second full moon in a calendar month. For the blue moon to occur, the first of the full moons must appear at or near the beginning of the month, so that the second will fall within the same month. Next question देखते हैं. Consider the following two statement, one label as assertion and reasoning. So assertion is comet revolved around the sun only in a long elliptical orbit, while as a reason is a comet develops a tail when it gets close to sun. So answer B is correct. Both A and R true, and R is not a correct explanation of A. So both the statements are correct, but R is not the correct. Reason is not the correct for assertion A. Right. So comet revolve around the sun only in long elliptical orbit. A comet develops a tail when it gets close to sun. Right. Next question देखते हैं. The eclipse of a sun occurs. So when the moon when moon comes between the sun and the earth. So eclipse of sun occurs means eclipse solar eclipse की बात कर रहे हैं जब चांद अर्थ और सन के बीच में अर्थ जब चांद सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. ठीक है. So that is known as solar eclipse. Next question देखते हैं. Consider the following statement. The earth is the nearest to the sun on about January 3. The earth is farthest from the sun on July 4th. So both the statements are correct. One is known as perihelion and other one is known as aphelion. Right. Next question is consider the following statement. The nearest large galaxy of Milky Way is Andromeda galaxy. Right. And the sun nearest known star is red dwarf star called Proxima Centauri at a distance of 4 light year away. Right. Next, so both the statements are correct. The nearest galaxy of Milky Way is Andromeda galaxy at a distance of about 2.5 million light years away, and the Andromeda galaxy is the nearest galaxy to the Earth apart from the smaller companion galaxies such as the Magellanic Clouds. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Assertion and reasoning वाला है भी. The planet Neptune appears blue in colors. The presence of methane gas in the atmosphere of Neptune is responsible for this color. So both A and R are true, and R is correct explanation of A. So Neptune का color blue है because of presence of methane gas in its atmosphere, right? So in atmosphere में methane gas की presence की वजह से
नेपट्यून प्लैनेट का कलर ब्लू है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंस वीनस इज सीन in the east in the morning and in the west in the evening, it is called morning star as well as evening star. The earth looks blue when seen from the space due to the presence of large amount of water, hence it is called as blue planet. So both the statements are correct, right? Next question देखते हैं, assertion and reasoning वाला भी. Venus is the brightest object in the sky after sunset, right? And Venus is the second planet from the sun in our solar system. So both the statements are correct, but reason is not the correct explanation of assertion, right? Next question देखते हैं. Our solar system is located in the Orion arm of Milky Way galaxy, about 2/3 of the way out from the center. The solar system formed from an interstellar cloud of dust and gas or nebula about 4.6 billion years ago. Right. So both the statements are correct. Our solar system is located in the Orion arm of the Milky Way galaxy, about 2/3 of the way out from the center. The sun is about 26,000 light year from the center of the Milky Way galaxy, which is about 80,000 to 1,20,000 light year across, right? We are located on one of its spiral arms out towards the edge. It takes the sun roughly 200 to 250 million years to orbit once around the Milky Way. In this orbital, we are traveling at a velocity of 155 miles per second. Oh my god, that's a huge one. Means 250 kilometer per second we are revolving, right? So next question देखते हैं. There are two statements, one labeled as assertion and second one is reasoning, right? So assertion one is, according to Nova hypothesis, solar planets were formed because of explosion of supernova. So a star becomes supernova in the stage when it has lack of hydrogen element. So both the statements are correct. According to supernova, solar hypotheses were formed because of explosion of supernova. A star becomes supernova in that stage when it has lack of hydrogen element in it, right? A supernova happens when there is a change in the core or center or of a star. A change can occur in two different ways, with both resulting in a supernova. The first type of supernova happens in the binary star system. Binary stars are the two stars that orbit at the same point, right? One of the stars, a carbon oxygen white dwarf, steals matter from its companion star. Eventually, the white dwarf accumulates too much matter. Having too much matter causes the star to explode, resulting in the supernova. The second type of supernova occurs at the end of the single star lifetime. As the star turns out of the nuclear fuel, some of its mass flows into its core. Eventually, the core is so heavy that it cannot withstand its own gravitational force. The core collapses, which results in giant explosion of supernova. The sun is a single star, but it does not have enough mass to become a supernova. So, next question देखते हैं. Only two planets, Venus and Uranus, revolve around the sun from east to west clockwise, while the other planets revolve around the sun from west to east anti-clockwise. So both the statements are correct, right? दो ही प्लैनेट है, वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सो वीनस और यूरेनस रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, while the other planet revolve around the sun from west to east. So that's all for today, and I hope you like this sessions, and please like this video, share this video, and subscribe our YouTube channel Easy Pariksha. And to get more informative videos, please subscribe, please press the bell icon to get the more informative videos, right? And please do subscribe our Telegram channel Easy Pariksha, so that you can get the PDF of this video from there. So all the best to all of you, and keep doing well. Thank you.